Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. AAP Chief Arvind Kejriwal promises to form a corporation to decide all matters related to taxi operators in the state. Government will take care of drivers in case of accidents. Boat owners, fisherfolk upset over pay parking outside the Margao wholesale fish market. MMC says they don't know what is going on. Strong winds with speeds of around 40 km per hour accompanied by thunderstorms, lightning will hit Goa on 17th and 18th. Maximum and minimum temperatures likely to hover around 33 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Now the news in detail. Visitors to the new market at Margao had a lucky escape after a chunk of concrete slab collapsed at the entrance of the market. Fortunately, no injuries were reported. Ironically, the new market is in-house an ancient building that is hardly being maintained by the municipality. Here's more. Councillors pointed out that the building is very old and feeble. As no maintenance has been done, the rainwater is seeping through the concrete which has damaged the iron rods, resulting in collapse of the slab. Chairperson had promised to repair the building. But 9 months have passed and nothing is being done in this regard. Luckily, the incident took place at night, so there were no people in and around the place. Looks as if chief officer and market inspectors are not really doing their job and getting the building repaired. हे आमची बिल्डिंग हा ती बरी एंटिक बिल्डिंग म्हणून एका 100 वर्सां जाले म्हणून आणि बरे पॉवरफुल हेजे काम बी बरे हा म्हणून ते असे भिजत रावले वर ते वर काहीच ना ताका सपोर्ट म्हणून काहीच ना वयर शेड म्हणटा ती ना सगळं उदक जमता आणि ते मागीर हे जाऊन ते सगळं ते सिमेंटांतल्यान भितर येता आनी ते थोडे थोडे कोसळता सो हांवें तेन्ना ते इंजिनियराक दाखयले चेअरपर्सनान सांग म्हाका इन्सिडन्स केल्ले की आपूण जाता तितले बेगीन डीएमए कडल्यान फंड हाडून एक काम करता म्हणून आज 9 म्हयने जाले कांयच ना फक्त आश्वासनां देखील आयकले आमी मार्केटान कांयच खंयच करूं ना तेणें आतां म्हाका समज हे आतां आज घेवन वयतलो हांव समज ते प्रायोरिटीचे समज तो करना जाल्यार तेचेर म्हाका मोर्चा व्हरपाक पडटलो काय बिल्डींग मोडी पर्यंत रावता काय म्हणून ताका विचारपाक पडटलें हे आतां ती बिल्डींग सगळे मोडी पर्यंत रावपाक पडटलें नाजाल्यार हे काम तरी करपाक जाय तेणी प्रायोरिटीचेर हांव रिक्वेस्ट करता ताका तेणी येवन लक्ष घालपाचें आनी जाता तितले बेगीन काम करून घेवपाचें. आयज म्हाका एक सांगपाक सामकें दूख दिसता की मार्केटा भितरली आमची जी बरी ओल्ड बिल्डींग आसा थंयतलो एक बरो सिमिटाचो कुडको रातचो पडलो हो समज दिसाचो कोणाचे जर तकलेर पडलेलो आनी एक खंय तरी वायट जाल्लें जाल्यार कशें दिसतालें. आयज कितें वायट जावच्या पयलीं आयज हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचो सेवो कडेन मागता की जाता तें बेगीन हें कितें जाता पळय तें रिपेर करून घेवचें लोकांचो जीव हे करचो. आयज कोरोना म्हणटा कोरोना भितर आनी हे दुसरी आनी गोश्ट जावपा ना वायट जावपा ना म्हणून हांव मागता मुद्दम सेवो कडेन की आयज जो म्युनिसिपालिटी आसा मडगांवची ती खंय तरी कितें जाता खंय तरी मोडलेल्या खंय तरी बिल्डिंगे खंय तरी आसा कितें तरी जाल्ल्या ते बिल्डींग रिपेर करची खंय तरी लक्ष घालचो की फक्त कलेक्शन म्हणून जावचें न्हू लोकांचो जीव आयज इम्पॉर्टंट आसा जीव लोकां कडेन पयशे ना. आयज हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन की तेणी जाता ते बेगीन हो रिपेर करून घेवचो. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. AAP Supremo and Delhi CM Arvind Kejriwal on 17th November announced that if they come to power, AAP will form a corporation to decide all matters related to the taxi operators in the state. Kejriwal, after a meeting with taxi drivers, said that the corporation that will comprise of taxi operators who will decide if an app-based taxi is required in Goa, when and how much fare to increase, and other matters connected with taxi operators. He also said that all taxi operators will be insured to provide free treatment to taxi operators in the event of an accident. Corporation will be formed, primarily composed of auto and taxi drivers. If a driver meets with an accident, government will bear medical expenses. Online RTO services. Aam Aadmi Party will challenge High Court's order on meters in Supreme Court. गोवा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन ऑटो और टैक्सी वालों को अगर माफिया बोलते हैं तो पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए.
माफिया वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने गोवा को लूटा है, माइंस को लूटा है, माइनिंग लूटते हैं ये लोग, अस्पतालों में लूटते हैं ये लोग, हर चीज लूटते हैं, गोवा का सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये ऑटो टैक्सी वाले माफिया नहीं है। सबसे पहली चीज, एक मुझे बताया गया कि सरकार पॉलिसी बनाती है, ऑटो टैक्सी वाले से पूछा नहीं जाता, ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है कि जिसकी वजह से आप सब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, उस कॉरपोरेशन में 1-2 अफसर होंगे और बाकी सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले होंगे, वो चलाएंगे उस कॉरपोरेशन को, वो बनाएंगे गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी। गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी कोई पॉलिटिशियन और कोई ब्यूरोक्रेट अफसर बैठ के नहीं बनाएगा, गोवा की पॉलिसी गोवा के टैक्सी वाले बनाएंगे, ये आप तय करेंगे। रेट क्या होना चाहिए आपका, फेयर कितना होना चाहिए, ये आप तय करेंगे। फेयर साल में कितनी बार बढ़ाना चाहिए, ये आप तय करेंगे। पूरे टैक्सी के पूरे सेक्टर को आप लोग डिसाइड करेंगे, टैक्सी के लोग डिसाइड करेंगे, कंप्यूटर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरे सेक्टर को। टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी, उसका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी। आरटीओ दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, वही दिल्ली वाला सिस्टम गोवा में भी लागू करेंगे। केवल फिटनेस के लिए आपको साल में एक बार गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारे सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि आपको किसी को रिश्वत ना देनी पड़े, आपको किसी पुलिस वाले को, किसी ट्रांसपोर्ट वाले को, किसी भी अफसर को। अभी एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, वो ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है। गोवा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर टैक्सी वालों का पक्ष नहीं रखा, इसलिए वो ऑर्डर आप लोगों के खिलाफ आ गया। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का जो मीटर वाला ऑर्डर है, उसको कल आपके टैक्सी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई। अमित जी यहाँ पे आए नहीं, अमित हमारे पार्टी में है, वो अमित जी ने जिम्मेदारी ली है, ये आपके गोवा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में आपको अच्छा बड़ा वकील देंगे। तो आज मैं ये आपके सामने देखिए, जो मैंने 4-5 बातें बोली है, ऐसा नहीं कि अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, और जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में और भी नई नई समस्या आएगी। 2 फैमिली को और तैयार करना है, तो 3 चीजें। एक, सारे टैक्सी वाले झाड़ू पे वोट देंगे। दूसरा, हर पैसेंजर को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बोलेंगे। और तीसरा, एक टैक्सी फैमिली 2 और फैमिली को तैयार करेगी। मंजूर है? The Taxi Owners Association said that they are in sync with the assurances given by Kejriwal and are confident that if Aam Aadmi Party come to power, they will fulfill their promises. टॅक्सीकारा खातीर ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान आज कितेंच केल्लें ना. आमी प्रत्यक्षान गव्हर्मेंटा कडेन सदांच मागताले की कॉन्फरन्स कितें तरी आमकां एक हेल्प करचो, बारीक टॅक्सीकारा खातीर कितें तरी दिवचें. जो बारीक टॅक्सीकार आयज कोविडाच्या हितून झुजतालो, पण आज ते दिले गेल्ले ना. ना त्याचेर कितें जालां, तेणी सांगलां एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करतलो म्हणून. कॉर्पोरेशन कित्याक हे आतां जी स्टेप बाय स्टेप आतां कितें आसा, आमची जी हायकोर्टान जी हे आसा पिटिशन आसा, आनी आमकां ते आतां सद्या हे कसो येयल्लो आसा, आतां येयल्ले आसा मिटराचे, आनी मिटरा खातीर खूब लोकांक त्रास जाल्लो आसा. लोकांची परमिटां कॅन्सल करपाक तेंच्यांनी तांकां संबंद जाले. इवन म्हाका धाडलेलो आसा, हांवें आजून करूं ना कित्याक तितले जमा नासले. Hiru Mahale and Irshad Sheikh for Goa 365 from Vasco and Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Boat owners and fisherfolk have come out all guns blazing against the pay parking fees that are being charged outside the wholesale fish market in Margao. Ironically, the Margao chairperson says that there is nobody authorized to collect SOPOR, raising questions as to what the municipality officials are doing. There is no pay parking board nor is there any ordinance. This is extortion, allege Boat Owners Association members. सोपो कलेक्ट करता पार्किंग चार्जीस. हांगा बोर्ड ना, काय ना, एक नोटिफिकेशन ना, काय ना. हांगा हे एक्सटॉर्शन रॅकेट चलता हँड इन ग्लो विथ PDA आनी पुलीस.
पुलीस कित्याक म्हणटा आतां ताका 3 दीस पयलीं मारला 3 दीस संडे मॉर्निंग आतां पर्यंत पुलिसांनी ताची दखल घेवंक ना ताका अरेस्ट करूंक ना कांय ना हे हांगा सगळे अस्तव्यस्त पडला हांगा पीडीए मार्केटान पळय घाण जाल्या दोपरभर रेबो जाला हांव चेअरमॅना कडेन रिक्वेस्ट करता पीडीएच्या हांगा येवन एक दोळे उगड दोळे तुका देवान दिल्या दोळे उगड आनी पळय हांगा कितें जालां ते कुसला हांगा किडे पडल्या हे पळय किडे हांगा भोंवताले आतां किडे पडल्या पळय म्हणटा हांगा कितें जालां ते हे आमी लोकांनी खावपाच्यो वस्तू विकता हांगा खाता आमी व्हरून घरा नुस्तें हे अशें जायत जाल्यार लोक पॅन्डेमीक चालू आहा मरतले हांगा हे जायत जाल्यार आनी दुसरी गजाल हे आतां पळय हे हांगा भितर 100 रुपयाचें नुस्तें व्हरपाक येता लोक आनी 100 रुपयाचें नुस्तें व्हरून 100 रुपया जोडून खाता तांकां सोंप मेवला सोंप कित्याक लागून तो जेन्ना कोणी नुस्तें घेता रस्त्याचेर आनी कितें बिजनस एक्टिविटी कॅरी ऑन करतात तेन्ना तांकां रायट आहा पयशे मागपाक जेन्ना गाडी पार्क जाता तेन्ना तांचे कडेन पयशे मागपाक रायट ना तेमी पे पार्किंगाचो बोर्ड लावपाक जाय आसलो कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव घालपाक जाय आसलें आनी तेन्ना ही एरिया नोटिफाय करपाक जाय आसली पार्किंग एरिया म्हणून तेन्ना की तेंच्यांनी पार्किंगाचे पयशे घेवपाक जाय इतली आजरांनी हे पळय मोटरसायकली आहाय लोकांची गाडी आहाय हे दिसाक लाखांचो स्कॅम हो आतां ताका अरेस्ट पासून कोण नाही कोण म्हणटा MLA विजय सरदेसाय हितून इन्वॉल्व आहा म्हणून ते कोणूच ताका अरेस्ट करूंक सोदना कित्याक लागून ही दादागिरी अरे आमच्या बोटकाराक जेन्ना रायटफुली ताका तेणें भितर सोपहारी करून तो भायर येवन गाडी पार्क केल्ली तेणें ताका येवन कित्याक मारपाक गरज जाली तांकां दे कॅन टेक लॉ इन देअर ओन हँड्स आनी विजय सरदेसाय जालो ते कोण अल्ताफ आनी कोण देव जाले वयर म्हाकाय केला आमगे मारुती येयली कोण मेल माय निसत्या गेले 2 दिसांनी आनी गाडी हांगा आयले तो द्रारा 2 हालोयता पयस मू द्रावर मुजबल येयलो माय म्हणा लागल पयस मागत हांव गेली हांवें म्हणलें केसो पयस जाय गाडये म्हणा लागलो हांवें तो मनीस मेला तेच बरें होना तूं वयता जाल्यार तूं काय धाडा जाल्यार हांव कित्याक 50 रुपया गाडी दोन एक किसोन घायल्या 50 रुपया म्हळ्यार बाजारात सिस्टम आमगे म्हाका स्वता बरें आमी तो एक धाड कसले प्रॉब्लेम ना ह्या होलसेल मार्केटान कांयच कंट्रोलाचेर ना कोण आपणाक जाय तें कोत्ता आयज जरी तर हे तर मारपाक तर हे बाग आयज आमच्या बोटकाराक तर मारपाक पावले जाल्यार मुखार कितें जातलें तें कांय खबर ना आयज पासून हेणें वचोन इमिजिएटली वचोन हाणें कंप्लेन दिलें पुलीस स्टेशनाचेर पूण पुलिसांनी कांयच करूंक ना ही रेजिस्टर्डूय जाल्यार तिवूय खबर ना म्हणटकच आयज हें सगळें विचारपा लागून आयज आमी ह्या फिश होलसेल फिश मार्केटान आयज आमी येयल्या 3 days have passed since a fight took place at the spot. The accused is roaming freely, boat owners allege. The Fatauda PI says he will sort out the matter legally, but in real, nothing is happening, boat owners alleged. थंय भायर ते म्युन्सिपालिटीची सोपो घेता कोण आनी थंय हो आमचो लोकल एक फिशरमॅन आहा ताणें कितें गाडी लायिल्ली थंय आनी तो जेन्ना ताचे कडेन सोपो मागपाक गेलो तेन्ना ताचे कडेन पयशां लागून कितें तांचें आर्ग्युमेंट जालें आनी ताणें त्या भुरग्यान ताजेर लूट मारली तो आज तांचे थोडे बोट ओनर्स ते हाजे ताजे एसोर्ट जाले ताका मात थंय हें करपाक प्रोटेस्ट करपाक थंय जमिल्ले सो ते आतां हांगा म्हाका विजीट करपाक आयिल्ले रिगार्डींग टू आस्क दॅट अबाउट दॅट इन्सिडंट सो तांचें आयकून घेतलें हांवें कितें आसा तें आनी हांवें तांकां सांगलें की हांव कितें आहा तें लिगली करतलो आनी हांव कितें आहा तें कायदेशीर करतलो त्या इन्सिडंटाचेर आनी आय वील गिव जस्टीस टू Margao chairperson Lyndon Pereira clarified no one has been told to charge for parking and promises an inquiry. कितें आमगेले कोण मारलो काय म्हाका विचारपा आयलो हांवें म्हणलें आमगेले कोण सोपो कलेक्शन करता ते म्हाका काय खबर ना म्हणलें तो म्हणटा थिंगा अर्ली मॉर्निंग म्हणटा तो इलिगल बिजनस चलता लायक पार्किंगाचे पयशे घेता म्हणटा तो आनी कोणी नुस्तें बी घेवपा आयला पळय तेंचे कडेन ते पार्किंगाचे पयशे आहा म्युन्सिपालिटी आमी कोणाक हें करूं ना पार्किंगाक पयशे घेवपाक कोणाक सांगूं ना आनी आमी कोणाक इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना तिका सो हांव नो कोण घेता ते पार्किंगाचे पयशे आय हॅव टू डू द इन्वेस्टिगेशन आनी फायंड आउट हू इज टेकिंग मनी फॉर दीस पार्किंग Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. The issue of demarcation and delimitation is heating up given that there are a few months left for the elections. The Sankol Panchayat on Wednesday has raised its strong objections to the formation of new paths in the new election roll, alleging that no geographical continuity was followed. Here's more. Sankol Panchayat said the formation of new part in roll is totally wrong and it's not fair on locals. He said that locals would face hardships during elections to cast their votes. Arish Kadar, who is also a Panch member and complainant, claimed that the plan had been formed without any geographical continuity and with an incorrect location plan. When I went to enroll some people, I just wanted to see the neighbors
site neighbors and all, because we have to verify before enrolling anyone. So when I went through the website, I came to know that a lot of new parts have been formed in 27 Kortali constituency. Part number 10, a new part has been formed, part number 10, forming of one section from near Maruti temple, which falls in ward number 7, the other portion from near Sulabh toilet, which falls in ward number 8, the other section which falls in my ward, in ward number 9, that is near Sachidanand temple. And in between there are around 6-7 parts which have been excluded, and this part especially in my ward, from my ward, Sachidanand temple, around 250 voters have been taken from there and put into this part number 10 and forming a new part where there is no geographic connectivity also, no continuity also, you can say. So if the department of the government agencies or the election commission or the people who are in charge of this formation of these new parts, if they, what I inquired with them, they told me that those parts which have 1,000 and above voters, we have formed a new part. Okay, I understood. If they formed a new part, why not take it in one line? If suppose a particular ward number 7 or part number 6 it is starting, then if they are falling short of 1,000 voters, you can take it from the adjacent part number 7, part number 8, part number 9, in a sequence, in a continuity. Not lifting people 300 from a different area and 300 people from a different area and putting and clubbing them together, making a part. Number 13, the voters are these voters are staying in one side of Zuai Nagar because they stay in near the second petrol pump. Okay, they suppose old Maruti temple, Ashapura hardware, they come this side. And thoda E colony means that is behind in Zuari area. Okay, according to Poile Popa Galale, then they have to come to vote in Ashiana school in Zuari Nagar. And where is Ashiana school? It is in Zari. Means people have to come to vote from one corner of Zuai Nagar, means one corner of Zuai Nagar, and they have to come to Zari to cast their votes. It's totally wrong. It's not fair. It's not totally, it is totally wrong. Election, assembly election. Forget about this Panchayat election. It will be after Panchayat election will be later. But for this assembly election itself, if you are doing such kind of thing, अरे हम किती म्हणता पंचायत बॉडी आसा आम पंचायतीचे बॉडी आसा सरपंच आसा तेंका घेन तेंका विचार तरी मेंबर्स आर एवरी वॉर्ड इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर यू कॅन टेक केअर ऑफ देम दे तुमकां दाखयतले ते which area falls in which ward and which is a better place for people to come and vote. But what they have done it totally wrong. So I just want the authority, whoever authority is in charge of this, please look into the matter because it will be very difficult for the voters to come out during election time. Hirumale for Gwatar 65 from Vasco. Union Minister Anurag Singh Thakur today announced that as many as 7,287 villages of 44 aspirational districts across Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra and Odisha will get mobile tower connectivity soon. The cabinet also approved continuation of road connectivity project for left-wing extremism affected areas up to March 2023. Here's more. The mobile connectivity project will be completed within 18 months after the signing of the agreement and likely to be completed by November 2023. The work related to provision of 4G mobile services in identified uncovered villages will be awarded through open competitive bidding process as per extant USOF procedures. The project is expected to be worth Rs 6,466 crores, he added. 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। ये व्यय जो है ये यूएसओ फंड से किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के उसके माध्यम से किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से देश के
इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। The Cabinet also gave its approval to the proposals of Department of Rural Development, Ministry of Rural Development for continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 1 and 2 up to September 2022 for completion of balance road and bridge works. 5,714 km road length, 358 bridge works are balanced for completion, and another 1,887 km road length and 40 bridges are being sanctioned. The scheme is being extended up to March 2023 for completion of these projects, which are very critical from communication and security point of view, Thakur said. इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। और सभी गांवों तक सड़क से जोड़ने का काम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर PMGSY 3 की भी मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखेंगे कि 1,12,419 करोड़ रुपए का व्यय होगा 2024-25 तक, और इसमें लगभग 1,40,041 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, 2,626 ब्रिजेस बनेंगे, और अगर आज की जो मैं बात कर रहा हूँ 33,822 करोड़ रुपए के व्यय की बात, उसमें से 32,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 2,648 लॉन्ग स्पैन ब्रिज ये भी पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट गोवा 365। We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Strong winds with speeds of around 40 km per hour will accompany thunderstorms on 17th and 18th. Thunderstorms accompanied by lightning are very likely at isolated areas and will most probably continue till the 21st. Many places will also receive light to moderate rainfall during this period. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Early morning travelers must remain alert for light haze and fog at isolated places until the 21st of November, as partly cloudy skies which are expected to clear out by the afternoon over the next 24 hours. The state can also expect to see a fall in minimum temperature by 1 degree centigrade. Owing to squally weather with wind speeds reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour along and off the South Maharashtra Goa coast, fishermen have been advised to avoid venturing out to sea on the 17th and 18th. Bureau Report, Goa 365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhone, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.